Hello, sir. Hey, hi Shreya, how are Uh, you? yeah, hi. I'm fine. I'm Shreya Banerjee from Infinity Sports, and today we have Mr. Ranjit Bajaj with us. तो आपके बारे में जितना भी बोला जाए वो बहुत ही कम है. फिर भी आपके बारे में आपके खुद से मुंह से सुनना ये बहुत ही फॉर्चुनेट होगा हम लोगों के लिए. So, please tell us about your lifetime and career. See, it's been very eventful journey, life, and the earliest memories of football are when I used to be playing school from my school and from my grandfather's school as well. So, तब से this journey has started, uh, and the love for football and sports has started. I played for India under 19, went to the Asian School Games, played Santosh Puri also, played Grand Cup also. So played in the big tournament of India, played high level of football. So जब मैं 19 साल की उम्र पे अपना ग्रेजुएशन करने के लिए वेंट टू लंदन, तब यहाँ पे उस टाइम पे हमारा क्लब होता था JCT, and that used to be a very big club, and it had Baichung Bhutia, it had I.M. Vijayan, Carlton Chapman, and national champion NFL जो पहले आई लीग होती थी उसके पहले चैंपियन was JCT. So we were doing very well. But when I came back, there was JCT shut down, and after JCT, Punjab, Haryana, Himachal, Jammu Kashmir, then Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Delhi, and Chandigarh, no professional club. So यहाँ के प्लेयर तो थे हमारे पास बहुत, because किसी भी अगर आप टीम में देख लो तो कोई दो दो पंजाब के लड़के तो होते ही हैं, चाहे ISL चाहे आई लीग की टीम हो. मगर जो दो लड़के वहां जा रहे थे उसकी वजह से एटलीस्ट देवर 20 और 30 और 40 who were not being able to make it every year, and they were picking up other sports. That means either they were going into other sports, or a lot of boys in Punjab were going into drugs. All of my friends also. So I thought okay, all we have to do is give them a little platform, and once we have given them a little platform, they will have to prove themselves. और वही हुआ. I just gave them a little platform, and after giving them the platform, we did really well. First year only, this is around 5 years back. हम सिक्स साइड फुटबॉल क्लब थे. सिक्स साइड फुटबॉल क्लब से हम स्टेट चैंपियनशिप में एंटर किया. स्टेट चैंपियनशिप जीती. उसी साल सेकंड डिवीजन गए. उसी साल सेकंड डिवीजन में we were runners up, and within 1 year we were playing in the top league. And within 1 year of entering, the next year, second year of I League, we were champions of I League. Not only champions of I League, we also were champions of under 13, under 15, under 18, and senior I Leagues. We were the only league club in history to hold all titles together. कभी किसी ने ऐसा नहीं किया. And main thing is because I think we are well known for promoting junior footballers and promoting youth football and grassroots football, and that's the way it should be. And our aim now is not to win national titles. Our aim is to produce the team for the World Cup. जो हमने बड़ा एम लगाया है 15 साल के बाद 2034 में जो वर्ल्ड कप होएगा उसके लिए not only we qualify, but I hope India does really well. And so we are working towards it already. We've taken boys who are 6, 7, 8 years from all over India. Scouting अभी हमारी 30% complete हुई है. 70% होएगी when the lockdown is over. And we will give them complete education, scholarship, khana, pina, rehna till the age of 16. Hoping that they make it in the Premier League in some clubs in Europe. So aim ये है कि by 2030 we have at least 8 or 9 boys playing in the Premier Leagues. Because we have 8 or 9 boys playing in the Premier Leagues, we'll qualify not only for the World Cup, we'll qualify for Asian Cup, we'll qualify for all tournaments. ओके सर. यहाँ पे ऐसे हम लोग जानते हैं कि ये जो आपने मिनर्वा पंजाब फुटबॉल क्लब, ये जो आप फाउंडर हैं एंड ओनर एज वेल एज, तो इसको आप बहुत ही कम खर्च में चलाते हैं एंड बहुत ज्यादा कुछ नाम और एटसेट्रा वहाँ पे रहते नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो प्लेयर्स है वो बहुत ही डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर एवरीथिंग. सो इसको लेके आपका क्या कहना है? See, the whole way of making sure we can compete with clubs जिनके पास बहुत पैसा है. We wanted to prove from the very beginning कि फुटबॉल ऐसी गेम है जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप जान लगाओगे, हार्ड वर्क करोगे, पैशन है आपके पास, तो आप फुटबॉल में सक्सीड कर सकते हो इवन अगेंस्ट द बिगेस्ट क्लब्स. बिकॉज
एंड ऑफ द डे पैसा नहीं खेल रहा, 11 वर्सेस 11 हो रहा है और उस टाइम पे किसी का पैसा नहीं दिखता है. सो अगर आप हार्ड वर्क करोगे, वो पैसे से ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते. सो यू कैन वर्क हार्डर देन देम एंड बीट देम. सो दैट्स व्हाट वी प्रूव्ड, that we were competing with ISL clubs in the junior leagues. We beat them all. We were competing with the biggest clubs like Mohun Bagan East Bengal, जिनका बजट हमारे से 10 गुना 20 गुना था. और इनफैक्ट उनके एक एक प्लेयर की सैलरी हमारे टोटल बजट से 4 गुना थी. तो we still won the title. So it was just proof के hard work and passion happens. So see, from the very beginning when boys come here, they are told that you are not in a football team, you are warriors. So you are on always when you go to the ground, it is not a ground, it is battlefield. So you have to be able to die for each other on the field. Only when the team is able to die for each other on the field, then you can compete with anybody, doesn't matter. So you are supposed to be willing to give blood on the field. So हमारा ये attitude सारा armed forces से आया है, because we are an armed forces academy, and because of that training which we give them, very very hard training, they do really really well. And so that's proved that hard work can get you where money cannot. ओके. सो सर, इसके साथ और भी एक जो हम लोगों को बहुत वी आर विलिंग टू नो कि मिशन 2034, ये जो आपका नेक्स्ट मिशन है, इसके लिए आप मतलब क्या क्या प्रिपरेशन ले रहे हैं? मतलब हम लोगों को सुनने में आया है कि 2034 में इंडिया को वर्ल्ड कप मिले, यही आप चाहते हैं. तो Yes. इसके बारे में थोड़ा बताएं. That is my dream. My dream is to make sure India reaches the World Cup, and not only reaches, we do really well. It's not only about qualifying, but making sure we leave our mark. And it's very much possible. But possible ये नहीं है कि हम अपनी लीग को इतना अच्छा बना लें कि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएं. Because वो चाइना ने ट्राई किया था और वो काम नहीं किया. Because they spent so much of money on the league, which even European clubs all put together did not. And they've not been able to qualify for the World Cup. Whereas बेल्जियम ने लीग पे पैसे नहीं खर्च किए, अपने प्लेयर्स पे पैसे खर्च किए, ग्रास रूट्स पे, कोचिंग पे और कोचेस पे, और दे आर वर्ल्ड नंबर 1 राइट नाउ. और उनके प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड लीग्स में खेल. देयर लीग इज नॉट गुड, बट देयर प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड लीग. So the aim is to make sure we have at least 10, 12, 15 Indians playing in the top leagues of the world. When that happens, because they are playing at such a high level, when they come together and play as a team, we'll automatically qualify for the World Cup. Abhi, it's very difficult for us to get a senior player into a European team. Why? Because उनको लगता है हमारा standard below है. But अगर आप इनको 6-7 साल की उम्र से ट्रेन करना शुरू करो और फिर उनको exposure दो from the age of 8, 9, 10, and they are going there every year and playing against teams who are as good as them, like Manchester United, PSG or Borussia Dortmund. और जब वो 12 साल या 13 साल का लड़का उनके 13 साल के लड़कों के अगेंस्ट 3 गोल सपोज मार दे, he will be picked up by that team, academy team. Then he'll be trained in 4 years in the German academy or whatever team he's picked up with. Then for him to get into the Premier League is much easier than for even, for example, Sunil Chhetri. If he scores 10 goals even in one match, he will not be picked up by Manchester United because it's too late. So they need people who can go long term for them, and they need people who they can train in their own way. So our aim is to make sure that happens. And इस टाइम तक दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे 6 साल के बच्चे के ऊपर they are going to be taken care of 100% scholarship, and they're going to be trained in a way a professional footballer is trained, not in a fun way. So hopefully we get results, and I truly believe that we will be there in the World Cup. डेफिनेटली सर. सो ये तो आपके करियर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना आपके मुंह से, सो बहुत अच्छा लगा. तो अभी जो ये सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है हम लोगों के, तो सारे वर्ल्ड में, तो यहाँ पे जो हो रहा है कि लॉकडाउन में हम सारे लोग घर पे हैं, एंड बहुत ही मतलब जो बहुत काम करते थे, बाहर निकलते थे, हर रोज निकलना होता था सबको, वो अभी एकदम घर पे ही कैद है, और जो भी काम हो रहा है वो वर्चुअली हो रहा है, एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग वर्चुअली. इवन टुडे इज राखी, वी आर विशिंग राखी एज वेल एज इन वर्चुअल वर्ल्ड. सो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग जब घर के अंदर रह रहे हैं तो हम लोगों के मेंटल पीस बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा है. तो बहुत कोई स्ट्रेस ले रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है खुद के काम से, एंड द एवरीडे लाइफ इन लॉकडाउन. तो यहाँ पे रह के, मतलब ऐसे लॉकडाउन पे रह के अपना मेंटल पीस को, स्पेसिफिकली यूथ लोगों के लिए,
ठीक ठाक रखने के लिए आपका क्या ख्याल है और आप क्या सजेस्ट करते हैं? See, I really think that, for example, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. जैसे आपने अभी देखा सुशांत सिंह राजपूत also committed suicide, and he was somebody who was successful. So जो बंदा इतना successful है कर सकता है, तो I mean normal people के लिए तो बहुत बुरी हालत है. And even for me, for you, everyone is facing this problem. Because आजकल क्या है कि everyone was used to being a world citizen, not only India citizen. So they could just pick up a flight and go to any city in the world or city in India, or they could just go for a drive wherever they wanted. And now when you can't do that, it's like jail. Basically, that the whole of the country has been put in jail. So, and it's not for any fault of theirs, but because the world is like this, you have to take it in a positive way. How? Because see, you have two choices now. You can either sulk about it and think that, oh my God, this is very wrong. What the hell? I'm wasting my life and their time, whatever. Or you can think कि मेरी अभी ये लेवल है मेरी अचीवमेंट्स का, और जो मेरे साथ वाले हैं उनके भी यही लेवल है. और जब लॉकडाउन खुलेगा तो इंस्टेड ऑफ मी बीइंग एट दिस लेवल, आई शुड बी एट दिस लेवल, सो दैट जैसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी जब आएगी, आई शुड बी द फर्स्ट वन गेटिंग दैट जॉब. And how do you do that? You don't have to spend any money. There are so many courses available. For example, जितने मेरे coaches हैं उनसे मैं specifically करवा रहा हूँ, because we expect our boys to be better than what they were yesterday. So मैं coaches से भी ये करवा रहा हूँ to set an example कि कोई किसी ने कर लिया CPR का course. CPR is basically first aid course and how to save a life by giving mouth to mouth, and giving CPR means pulmonary resuscitation with the hand. And then a first aid course will be online free available hai. Or you do some kind of a graphic designing course which is available free, or you go onto YouTube and you learn new skills. See, when you add, and that course may be just a 1-day course or maybe a 5-hour video on YouTube, but when you add that to your resume, and I get, suppose I'm a club owner and or I'm a business owner and I get 5 resumes, सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, सारे ग्रेजुएट है, बट एक बंदे ने मेरे को ऐड किया हुआ है कि मैं सीपीआर में भी हूँ और मैं सेफ्टी में भी हूँ और मैं कंप्यूटर पे भी ये कर लेता हूँ. साथ में आई ऑल्सो हैव टेकन अ कोर्स इन कोविड-19 मैनेजमेंट और कोविड-19 सेफ्टी हेल्थ प्रिकॉशंस जो आजकल मिल रहे हैं, और मार्केटिंग इन कोविड सिचुएशन, और वट एवर योर स्कोप इज, मैनेजमेंट इन कोविड सिचुएशन, जो भी आप करना चाहते हो, उसके ऑनलाइन कोर्सेज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. Take those courses, add them to your resume, and you'll see how much better you become from the world. So when you're adding that, you start feeling good about yourself, because then you know that you're not wasting time. You're actually adding to your thing, and you know, no matter what happens, this is not spent time badly. That means कि ये मैं time waste नहीं हुआ मेरी life. You can't say कि मेरी time में waste हुआ. I've added something. So when you're adding something, when you're adding new skills, when you're adding new qualifications, you never feel कि oh my God, what is it? कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, because कुछ हो रहा है. Okay, so जो ये तो गया मेंटल पीस एंड मेंटल फिटनेस के बारे में, और अभी जो चल रहा है कोरोना पैंडेमिक एंड ऑल, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो हो रहा है, हम लोगों के डॉक्टर्स बता रहे हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यही एक बात चल रहा है, जो है कि इम्यूनिटी पावर. सो इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है हम लोगों को, एंड घर पे रह के या फिर जो भी थोड़ा बहुत काम के लिए जो कोई बाहर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब आपका सजेशन? First of all, Shreya, you have to make sure that we are wearing masks at all time. मैंने कल एक स्टडी देखी जहाँ पे एक यूएस में एक बार्बर था, एंड ही हैड, बाद में पता लगा that he had coronavirus, and for over 2 weeks he had coronavirus. And while he had coronavirus, he cut the hair or shaved or did massage or whatever for over 184 customers while he had coronavirus. But none of the customers got corona. Why? Because all the customers say that we remember this guy was wearing a mask at all times. He didn't take off his mask even once. And he was with them for between 15 to 45 minutes. So that is proof now that just by wearing a mask, even if you are with a person who's got coronavirus, you will not get that virus. And if that's all it takes, then I don't think that even you need immunity. You just need to wear a mask. Yes, you don't need to wear a mask at home when you're with your family, but the moment you go out, see, it's not about us. The young people apparently have good power than
के जितने हो रहे हैं उनमें से 95-98% ठीक हो रहे हैं. प्रॉब्लम है कि वी डोंट वांट टू ब्रिंग इट टू आवर पेरेंट्स, वी डोंट वांट टू ब्रिंग इट टू आवर एल्डर्स कि हमारी वजह से हमारे को हो जाए कुछ ना होए, बट हमारी वजह से उनको ना हो जाए. So it's essential that we all wear masks, and obviously when we go out we wash our hands so many times, we have sanitized. These simple things can make it. And obviously, see, immunity, if you're not healthy, you will not be immune. If you're weak, your body will not be immune. So exercise is very important at this time. इस टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपकी इम्यूनिटी लो होगी. अगर इम्यूनिटी लो होगी तो यू आर ससेप्टेबल टू गेटिंग द वायरस. But I'm saying, even if your immunity is low, if you wear a mask at all times, you're well protected, and it's been proven now by studies. So that's all we need to do. Not act like Donald Trump, but listen to Mr. Narendra Modi and say, wear masks. ओके ओके सो ये तो गया रिसेंट टाइम्स के बारे में एंड एवरीथिंग. तो अभी जो इन्फिनिटी स्पोर्ट्स है हम लोगों के, इन्फिनिटी स्पोर्ट्स का जो ये जो उद्योग है कि यूथ लोगों को स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हो जो नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. मतलब हम लोग जो यूथ है वो अपने करियर और पैशन और या फिर हॉबी इन सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई मेंटल प्रॉब्लम, फैमिली सपोर्ट एक्सेट्रा. सो इन सबको जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सबको हेल्प करना इन्फिनिटी स्पोर्ट्स का एक ट्राई कर रहे हैं वो लोग. तो आपको इसको लेके क्या ख्याल है? मतलब इज इट वेरी गुड फॉर द I think it's a great job. I think you guys are doing, Infinity Sports is doing such a great job, because now is the time when you come to know, see, खुशी के टाइम पे तो सारे सपोर्ट करते हैं. जब प्रॉब्लम आती है तब पता लगता है कि असली ह्यूमंस, यहाँ पे दोस्त नहीं है, असली ह्यूमंस कौन, असली इंडियंस कौन. बिकॉज इस टाइम पे रियल इंडियंस विल स्टैंड अप एंड से दैट वी विल मेक श्योर दैट वी विल हेल्प समवन. सी, इसमें आपको पैसों की जरूरत भी नहीं है. That means you can be in the lower strata of society, but you can still keep water out for the birds or for dogs, or little bit food for the dogs, even if you're very very poor. Okay, तो पानी तो रख ही सकते हो. उसके बाद यही go to, और जो सबसे गरीब बंदे का खून है या सबसे अमीर बंदे का, अंबानी का खून है, बिल्कुल खून की वैल्यू सेम होती है. So blood donation करो. So these are the things, values which we should be teaching everybody, that during this time we should be helping each other. So Infinity Sports is doing a great job. In fact, there's another person I want to mention. His name is Sahil, and he's working for Dream 11 Sports Foundation. And Dream 11 Sports Foundation ऐसी foundation है जो इस time पे not only sports people, anybody involved with sports, managers, groundsmen, referee, linesmen, physiotherapists, massage guys, anyone who's really requiring help at this time of any kind, can contact them, and they are willing to help if the person is verified. So they can all contact me through Infinity Sports. This is an appeal, and I will put you in touch with the Dream 11 Foundation. Okay. So the next question is Infinity Sports जो मतलब स्टेप्स ले रहे हैं वो यंग टैलेंट हंटिंग के लिए, उसको मतलब आप कैसे देख रहे हैं? मतलब इन 2034 के वर्ल्ड कप जो आप लोग आप कुछ देर पहले ही बता रहे थे, तो So I am उसमें very happy to announce on this program itself that you are going to be our talent hunt partner. So that means कि अभी हमारा सिर्फ 30% over हुआ है, 70% of the country still to be done, which is going to be continuing for the entire year the moment lockdown opens. So in partnership with you guys, we will be जहाँ जिस states में आप help करोगे हमारी, we will be helping, taking your help, and we'll be doing extensive talent hunt and scouting there. So it's a good platform to announce, and probably by next week the posters also will be out. ओके. सो हम लोगों के तो बहुत सारे बातें हुए, तो अभी मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जो आपका लाइव तो चल रहा है एंड बहुत कोई देख भी रहे हैं उसको. सो एक कमेंट में कोई एक पूछ रहा है कि बजाज सर, देयर इज एनी प्लान फॉर मिनर्वा एकेडमी एट कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट? Yes, definitely. We have big plans for Minerva in the Northeast and in Kolkata. So the moment the pandemic opens, I've got a lot of people who have offered me space and land there.
I will be going there to Calcutta and to the northeast, especially to Assam and in Imphal, and looking at those places. And hopefully by next year we have centers in Manipur, and we have centers in Assam, and we have centers in Bengal. ओके सो बहुत सारे काम के बात तो हुए, तो एक साइड क्वेश्चन जस्ट फ्रॉम आप कह सकते हैं कि फ्रॉम माय पर्सनल इंटरेस्ट, कि कोलकाता में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लड़के लोग होते हैं या फिर लड़कियां भी होते हैं जो हम लोगों के पारा फुटबॉल और पारा क्रिकेट ये बहुत ज्यादा यहाँ पे कल्चर है कोलकाता में। तो इसको लेके आपका क्या ख्याल है, मतलब यहाँ पे से कोई ऐसा नया कुछ हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं जो Infinity Sports का काम है? So you're talking about the small-sided football. Yeah. That's what real football is. See, Brazil में football came up because of five-a-side football or beach soccer. France में soccer came up because वो cemented cages में और cement के pitches पे खेलते हैं. Favelas in Brazil also used to be playing on the streets with just tin balls. So जहाँ पे असली football grow हुआ है वहाँ पे small-sided games में से ही football players निकलते हैं. Because see, in a small-sided game, you touch the ball 50 times, whereas in a normal game, you touch the ball 5 times. And there are 10 goals happening compared to 1 or 2 goals in a normal match. So you come to know a lot about defense and attackers and midfield and passing and dribbling and shooting in small spaces from small-sided games. So I think real talent can be picked up. And if really kids want to develop, I would suggest they should always play small-sided games. They should go and pick up a football and go there and play with your friends. Even if you have 6 people, is good enough. 3-a-side is awesome football. 2-a-side is great football. One versus one is also great fun. So it's never good. And if you are alone, then you have a wall as a partner. So I think that because see, Kerala, mein you see 7-a-side football, it's very popular. You got 40,000 people watching that match. In Bengal, it's very, very popular culture in Calcutta of Cape football, and everybody watches it so much. I mean, it's as popular as the I-League or any other match. So, and this is the kind of culture we need. If in Northeast also, they have leagues which are watched by the whole town. Unless and until the whole country becomes like this, that means small-sided games, we will not develop. So it's a must to have all these things. Okay. सो ये आपको कैरियर के बारे में तो बहुत कुछ बताए, और हम लोग मतलब पर्सनल स्टडी मैंने जो किया था आपके बारे में आपके साथ वैसे लाइफ में आने के पहले, तो वहां पे मुझे पता चला कि यू आर द फाउंडर ऑफ मिनर्वा पंजाब फुटबॉल, ये तो है ही, और उसके साथ आपने खुद भी मिनर्वा पंजाब फुटबॉल आई लीग के साथ साथ एकदम 3 years कंटिन्यूअस बेसिस में 15-16, 16-17 एंड 17-18 में नाइकी प्रीमियर कप एंड ऑल इंडिया चैंपियंस रहा है। तो ये जो मतलब एक साथ इतना सारा अचीवमेंट्स, ये कैसे मतलब कर सकते हैं, ये जो कंटिन्यूएशन है अचीवमेंट्स का, ये कैसे बरकरार रख सकते हैं? You're right, Shreyas. It's been very difficult, but it's been proof to people that it can be done. And it's not so एक बारी जो टाइटल जीतता है तो वो कहते हैं तुक्का लग गया. So if you repeat the performance, then they say that yes, this is an excellent club and it's proof because we have done it year over year, and that means our system is working. So it's great satisfaction to me because I can see development happening. See, development is not winning titles, but development is making sure that your boys are being selected in the national team. So in the last 5 years, we've had so many internationals. That means 50%, 40% of all Indian junior teams have been Minervan. And the goal which was scored in the World Cup, only goal which we scored, was also by Minervan Jackson Singh. So it's a great feeling to have this. And then we've had great boys like Narinder Gilot and Vikram Pratap Singh and Gibson and Vikash and Harmeepom who have just come up in this season. Himanshu Jangra, who will be coming, or Himanshu Jangra, Chote, Toiba, who are all these youth stars. Before that, Nong, Jackson, Anwar Ali, these guys have made us really, really proud. So it just shows that one little academy, if it works hard, doesn't require money, does it in a proper way, can go really long and compete with the country's best. And I can say it for a fact that if we are playing the under 15s or under 13s
of any foreign club right now, we'll have a great chance of beating them because that's how good my boys are. Because they play against my senior teams, so I'm confident. ओके, सो ये तो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी जो हम लोगों के जनरेशन चल रहा है, लाइक बहुत छोटा बच्चा भी अगर कोई होता है तो ज्यादा रोता है और फिर कुछ करता है, तो एक मोबाइल या फिर एक टीवी के सामने उसको बैठाया जाता है और फिर वो चुप हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये इनहेरिटेड होते जा रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा पबजी, फ्री फायर्स एंड लाइक दिस मोबाइल गेम्स, ये बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर हावी हो रहा है, यूथ लोगों के ऊपर। और बाहर जाके खेलना या फिर फील्ड में जाके खेलना, जो हम लोग, मेरे टाइम में मैं भी थोड़ा बहुत कुछ खेला है, लेकिन अभी जो मैं देखती हूँ एकदम छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो एकदम स्टार्टिंग से ही फोन को लेके बैठ जाते हैं, एंड एक सोफा मिल गया, एक फोन मिल गया तो वर्ल्ड इज देयर। That's good. तो ये जो प्रैक्टिस चल रहा है, ये तो सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक होगा और दिमाग के लिए भी, एंड जो नया टैलेंट होगा वो भी खो जा रहा है कहीं पे। तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? In fact, इस पैंडेमिक में इस made it even worse because अब तो उनके पास खाना मिल गया कि हमने बाहर जाना ही नहीं है, we are not allowed to go out. तो क्या करें, हम घर बैठ के क्या करें, बताओ क्या करें, तो हम इसलिए तो कर रहे हैं। तो they, you know, even parents can't stop them. So it's a very, very bad thing happening. I mean, I've seen people who have been addicted to, it's like an addiction, ऐसे drug addiction होती है, addiction हो गई है इसकी. And if you are spending more time on the phone than you are spending talking to actual people, that means you have lost touch with reality. मतलब अगर आप 2 या 3 घंटे फोन पे लगा रहे हो और अगर आप 2-3 घंटे एटलीस्ट बातें नहीं कर रहे हो लोगों से, दैट मीन्स कि आपकी इंटरेक्शन आपकी वैसी कम है लोगों से इस टाइम पे, एंड देन यू आर ओनली ऑन द फोन, सो इट बिकम्स देन वेरी डिफिकल्ट टू लीव एंड लिव विदाउट। आजकल लोग कहते हैं आई वांट टू डिटॉक्सिफाई, पहले कहते थे ड्रग्स के साथ कि आई वांट टू डिटॉक्सिफाई, कि टॉक्सिफिकेशन मैंने हटानी है। आजकल जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया, कि I want to be for 1 month totally off that because that is giving me so much of stress and problems. So I want to really relax and clean my mind. So really relaxing and cleaning your mind is now getting off social media for 1 month. And it actually shows you a lot. You know, when you do that, I actually take breaks. I don't go onto social media every single day. I hardly go onto Instagram. I go onto Facebook once in a month probably. I go onto Twitter every 4 days. So I make sure that my limit, but the point is it's a must, but it's a must in quantity. So I'm not even saying you be like me and do once in 4 days. You do it once in a day, but fix a time that, you know, for half an hour and not more than that. If you say, okay, fine, half an hour, and you stick to that, it's a must. You must be on social media. Why? Because people who are not going to be on social media and technology and live with the latest things and be a world citizen will be left far behind. So you have to encourage kids to be there, but limit your time. You cannot be unlimited. Anything in excess will ruin you, especially this, because you're already going to be kids these days are studying online as well. So 3-4 hours का screen time तो उनके पढ़ाई का हो गया। उसके बाद आप बोलो 3-4 घंटे टीवी देख लेंगे, वो मिनिमम देखते हैं, और फिर 3-4 घंटे फोन पे हो गए, मतलब 12 घंटे दिन पे they're looking at a screen, and it is the worst thing which can happen. सो सर, वुमेन फुटबॉल, जो मतलब बहुत कोई ऐसा सोचता है कि वुमेन फुटबॉल, वुमेन्स दे आर नॉट लाइक द मेन्स देयर, बट वुमेन फुटबॉल एक बार प्रूव कर दिया है कि सेम देयर इज द थिंग इज सेम। सो वुमेन फुटबॉल को लेके आपका क्या ख्याल है? Yeah, in fact, not only same, I think they're better than the men. See, our men have problems in beating Afghanistan and Sri Lanka and teams like that. Whereas the women champions, they beat them 5-0, 6-0, 7-0. So that is the way. If we want to actually be champions in Asia, at least qualify for the World Cup. When our men's team starts beating teams like Nepal, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan 6, 7, 8-0, then we can think of going for the World Cup. When we think of losing to them or even drawing with them, we can't even have dreams of Asia Cup. But our women are making us proud on a daily basis. And we're not putting any money on them. We're not putting any marketing on them. We're not putting any training on them. And they're still giving these results. So imagine अगर आप इन पे थोड़ा सा भी जो काम men पे करते हो कर दो, they will go and reach the World Cup before us. And I think that's the problem with AIFF. उनको लगता है कि उनकी type of बेइज्जती है कि कहीं women पहले ना पहुंच जाए. Because women पे तो हमने काम ही नहीं किया, और कहीं गलती से ये पहले पहुंच जाएंगी तो फिर तो हमारी बेइज्जती।
So they are actually taking it as an ego problem. Whereas it anybody reaching the World Cup, women or men, is the same dream, and the dream has come true. Our country has reached the World Cup. Look at Megan Rapinoe of the US. She's more well known than any male footballer also today. So it's not that women football are not superstars. And in US, they've been fighting a battle for equal pay because they're saying that we are performing better than the men, and they actually in quote fighting that battle. Yeah. So अभी आपने बताया कि वुमेन फुटबॉल In के fact, somebody has asked me a question. Yeah. Go on, go on. या सो अभी आपने बताया कि वुमेन फुटबॉल के लिए जो मार्केटिंग एंड ऑल है ये तो कोई नहीं करता है, मतलब अगर उन लोगों का कुछ अचीवमेंट भी होता है तो हार्डली वी गेट न्यूज, जितना एक नॉर्मल फुटबॉल टीम जो मेंस को लेके होते हैं उसका एक अचीवमेंट जितना ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है उसमें से 1% भी वुमेन फुटबॉल को नहीं मिलता है। तो इसको लेके आपका क्या ख्याल है, मतलब यहाँ पे जो मार्केटिंग करना चाहिए वो कैसे हम कर सकते हैं, और जब मार्केटिंग के बात आते भी है तब भी लोगों को ऐसा ख्याल होता है कि नहीं चलो वो तो होता रहता है एंड लाइक दिस, तो इसको कैसे चेंज करना है, मतलब मेंटालिटी एंड I think you need to understand that you cannot be saying that you develop in sports in the world. जो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे को मेडल्स मिले ओलंपिक्स में, तो वहां पे हम why are we only spending on why are we not only spending on men there? We are spending on medal hopefuls. मतलब देखते हैं कि इस लड़की या लड़के का मेडल होपफुल है, ये होपफुल है मेडल जीतने के लिए, इस पे पैसे खर्च करो। तो वहां पे तो हम नहीं देख रहे हैं। तो जहां पे अगर आप यू नो दैट इट्स ऑल अबाउट मेडल्स इन द ओलंपिक्स, वो मेडल वन बाय अ गर्ल और मेडल वन बाय अ बॉय इज अ गोल्ड मेडल, इट्स नॉट डिफरेंट टैली. So you need to develop women's sports and you need to market them, because you can't keep on saying that we're not qualifying for the World Cup. We are a population of 1.4 billion. 1.4 billion में से 700 million are women. So you're not a country of 1.4 billion. You're a country of 1.4 billion along with women. And there are 2 World Cups we are fighting for, not just one. सो बहुत सारे काम के बाद तो हुए, तो अब थोड़ा सा एक सॉफ्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो ये तो रोक टोक है कि ज्यादा लोग एक साथ नहीं रहना है एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, तो ये सारे मान भी रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई कोई नहीं भी मान रहे हैं एंड इसको लेके चल रहा है अभी। तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलकाता में सबसे पॉपुलर जो फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। तो वो 3 या 4 दिन हम लोग लाइक एवरी ईयर वी यूज टू काउंट द डेज कि अभी आना है और ये करना है, मार्केटिंग एंड ऑल एवरीथिंग, लाइक इट्स अ बिग फेस्टिवल। सो इसको लेके आपका क्या ख्याल है, मतलब इस बार तो ऐसे हम लोग नॉर्मल जैसे एवरी ईयर करते हैं वैसे तो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और नॉट ओनली दैट एंजॉय करना तो एक साइड में है, दुर्गा पूजा के साथ बहुत लोगों के मतलब यू नो इनकम्स एंड ऑल ये सारे जुड़ा रहता है, बहुत कोई बस उसका इनकम वहां पे उस 4 दिन के लिए होता रहता है सबसे ज्यादा। तो ये सबको लेके आपका क्या ख्याल है, मतलब क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? That's not only for Durga Puja, Shreya. It's also for all our coaches. सारी academies बंद है। अब कैलकाटा लीग में, कैलकाटा लीग नहीं हुई, कैलकाटा लीग इतनी सारी टीम्स हैं कैलकाटा लीग के 4 डिविजन्स में कि उतने कोचेस देख लो, उतने लाइन्समैन देख लो, उतने ग्राउंड्स वाले ले लो, उतने रेफरीज ले लो, सबके पैसे नहीं हैं। And they wait for these 2 months and they earn enough money in these 3 months or 2 months that they can run their household for the year. तो वो लीग ही कैंसिल हो गई है। So this is happening in everything. अब दुर्गा पूजा में अब आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, उसके बाद क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, और जब तक इसका समाधान नहीं मिलता और we learn to live with it. And how do we learn to live with it? I think as long as we see, I know दुर्गा पूजा में मेन चीज ये होती थी कि सारे इकट्ठे होते थे, और वहां पे अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। बट सेम वे अब होली में क्या करोगे, होली में कलर कैसे लगाओगे एक दूसरे को, खुद के लगाने पड़ेंगे आपको। And the same way, you know, in Diwali, we used to hold each other's hands and do the Fuljadi. We can't do that anymore. So it's a new world and we have to learn to live with it. But we know we know that it's a matter of time. We know vaccines are coming up. We know if maximum within a year,
or maximum 1.5 years, everything will be back to normal again. So we have to just cut this time and make sure हमारे losses सबसे ज़्यादा cut हुए. And when we know कि 1 साल चलेगा अभी, so we have to plan for 1 year ahead. Not plan कि अब हमारा अगले महीने क्या होएगा, अगले महीने के पैसे कैसे करें. We have to come up with some kind of a plan as individuals, so that we have to be ready for this being on for at least 1.5 years. सो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है एंड हम लोग सारे घर पे रह रहे हैं एंड सबसे ज्यादा लड़की लोगों को, मतलब मैं पर्सनली ये फील कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा खा रही हूँ और घर पे बैठ के रह रही हूँ तो बहुत ज्यादा फैट हो जा रहा है एंड ऑल. तो वैसे भी उतना ज्यादा काम नहीं है, खाना एंड सोना बस काम हो गया है अभी. तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा बॉडी का प्रॉब्लम होता है, लाइक वेट बढ़ रहा है एंड ऑल. तो इसको लेके आपका मतलब क्या ख्याल है कि डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? I can help you there. So आप जब Infinity Sports पे जाके कोई पोस्टर लगा देना कि anybody who requires diet charts for losing weight, for gaining weight, for core strength, upper body strength, lower body strength, we are here to help at Minerva. So we will give you diet charts free of cost. We're not going to charge anything. It's free of cost, so that, see, if we are fitter Indians, we have a better chance of reaching all the World Cups. So it's for everybody. And you don't require, the main thing is, लोगों को लगता है you need to go to the gym. No, you don't require to go to the gym, and you don't require any equipment. You require your own body weight. And we can give you enough exercises with your own body weight that you will be stronger than ever. And you need to be flexible, you need to be supple, along with having muscle weight. And you need to, don't just think you need to lose weight, you need to lose fat. You don't need to lose muscle. So there's a very big difference. And people think lose weight means stop eating. No, lose weight means eat, but exercise with it, so that the protein is being converted, and protein and carbs are being converted into muscle and not into fat. So we can help. Yeah, definitely. So women football को लेके तो someone has asked on your view, Tanmay, saying that share your view on the Chandigarh League and Derby. So the Chandigarh League unfortunately happened 5 years ago, and it happened for the first time after 14 years, which we had forced the association to do. And again, the association after that is dead, and they have not got another state league. The only league which happened in the last 20 years was that league which happened 5 years ago, and which Minerva won. That is why we shifted to Punjab Football Association, and there they have a very good system. They have very good teams playing. So in the top league, they have JCT, you have BSF, you have CRPF, you have Railways. So you have good clubs also playing there against us, and it's a high quality football. Punjab Police is really, really good as well. And then you have a second division, and then you have a qualification for the second division as well. So it's a proper system. Then you have under 14 and under 17 for boys, and under 14 and under 17 for girls. And this year they started the baby leagues also. So Punjab is doing pretty well where football is concerned. And the league on the derby is that you have to be ready for a new derby now. Because till the time East Bengal reaches ISL, till that time, more probably Mohammedan Sporting is going to be playing with you in the I-League. So derby is ready. So this year I predict that Mohammedan Sporting will be in the I-League, and you will have at least 2 matches against East Bengal, which will sadly be replacing the matches which we used to have against Mohun Bagan till the time East Bengal and probably Mohammedan Sporting also reach ISL. ओके. सो वुमेन फुटबॉल को लेके तो आपने आपके नजरिया बताए. तो अभी आप चाइल्ड टैलेंट जो होते हैं, मतलब चाइल्ड स्पोर्ट्स एंड ऑल, जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को सिखाना एंड उन लोगों को ट्रेन करना, इसको लेके आपको क्या ख्याल है? मतलब कितने साल से करना, मतलब ट्रेन करना अच्छा होगा? और See, it depends. If you want to be professional in any sport other than cricket में you can start at the age of 11, 12. But any other sport, you need to start at the age of 6 maximum. Because if you are talking about being world champion, talking about having a chance in the Olympics, then 6 is the age you start. And that age is some age, because at that time, the number of times you have to practice something to get it right is very, very few compared to if you do the same thing at the age of 13. Because you pick up things faster. And once you are 13, you have developed something already, habits. Then to break that habit and get the right technique in, it becomes very difficult.
So to get to the excellence level, it becomes really, really tough. That is why if we should not just force a child into any game, we should see what game he has aptitude for. And when you say aptitude, basically is just love and passion. What game is the child willing to get up in the morning himself without being poked and be ready and asking you, okay, please take me, take me, take me, than you forcing him, okay, you go and play this game. So if he loves the game, unless the child loves the game, at this age, he has to be made to love the game. Yes, start at 6, but make him love the game. Don't make him love the game. By the age of 12, you lose him. या सो ये तो गया स्पोर्ट्स के बारे में. तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसको लेके आपका क्या ख्याल है? मतलब क्या क्या होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन के अंदर, और क्या उसको मतलब क्या अपने अंदर इनहेरिट करना चाहिए? Sportsmen should be like officers, and officers की qualities क्या होती हैं? Honesty, integrity, leadership, cooperation, and adaptable and sociable. मतलब get along with everybody in the team. Then being a quick decision maker. Decision making is very important. Leadership is, I've already mentioned it, and obviously stamina, endurance are the qualities which are actual qualities. They're not just bolte stamina. Qualities. There are 3 types of qualities: mental, moral, and physical. So these are one of the physical qualities you have. And absence of fear, that means, or ability to get over fear. Fear is a natural thing. Everybody has fear. But how to get over all kinds of fear. So fear should never be a limitation. And the attitude of being stubborn, dheetpanti, that means never giving up. Unless a sportsman has, forget about everything else, the attitude of never giving up, he can never succeed at the highest level. So the never giving up has to be, the attitude has to be there from, doesn't matter what league you're playing in, what match you're playing in, घर पे खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, you can never in a match ever give up. ओके, सो एक और भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट बंगाल आईएसएल खेलेगा कि नहीं, इसको लेके आपको क्या ख्याल है? मतलब I will guarantee you East Bengal will play ISL, but वो कब खेलेगा, that is the problem. Because we were hearing from all the officials जो हमारे को इतने सालों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, और इस साल ही इन्होंने 10 अलग इन्वेस्टर्स का नाम लिया है और अभी तक कोई नहीं आया है. And ISL is going to start in a couple of months. So it will be very sad to have ISL without East Bengal there, because Mohun Bagan is there already now. So hopefully we see them soon, but that will only be possible if the officials are willing to give some power to investors, because investor तभी आएगा अगर वो power दोगे. अगर आप power अपने पास रखोगे तो investor आके पैसे दे के आपसे club क्यों run करवाएगा? The whole point of investor coming is that you will have to hand over power to them, or some power at least. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मुझे जो बताना है आपको वो है कि इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के साथ इन फ्यूचर ऐसा कोई प्लान है जिसमें टोटल ईस्ट जोन से टैलेंट हंट कर सकते हैं? Yes, so Infinity Sports के साथ बिल्कुल प्लान है. I've already mentioned it that you will be our scouting and talent partners there. अभी हम जब अपना वर्ल्ड कप बैच शुरू करने लगे हैं, so Bengal में स्पेशली जब हम करेंगे, and even in districts next to Bengal and even probably states next to Bengal in the northeast, we will be, and even probably for Odisha and for Bihar and for Jharkhand, we'll be using you guys as our partners. So you will be helping us organize trials in every district of that state. So hopefully we'll pick up the new future stars, World Cup stars from there, जो 10 साल के बाद जाके इंडिया को बहुत प्राउड फील कराएंगे. Okay, sir. So thank you so much for giving the precious times of yours. We are very thankful to you. Thank you, sir. Thank you so much, Shreya. It's been a pleasure. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you, sir.